Hello my dear students, once again I Praveen Dubey welcome you all to RBS Classes, the Pariksha Guru, and the classes are going fast these days because the notifications have been released and I am here to get you selected. I am here to tell you the facts that you'll find in your exam, and the success will not be far from you, and for that you must subscribe, watch, like and share this channel, and don't forget pressing bell icons in order to get all the notifications. And for TGT, PGT, for TGT and PGT, this video that I am going to give you today will be very important. This is such a topic that I have brought for you today that most of the students commit mistake over here, and the topic is preposition, and this topic is very big and that's why it cannot be covered in a very small video. That's why I have specified it as preposition of time. Through this video you must try to understand that how prepositions must be used. So today the topic is preposition of time. Preposition of time. Actually, there is a big list of prepositions of time, and even prepositions of time cannot be covered in a small video, but a few of them I am going to cover, and through that you must try to understand that how the prepositions are used, because this is such a topic that even after a hard labor you are supposed to commit mistakes. बहुत सारे मेहनत के बाद भी गलतियां prepositions में हो जाती हैं. So a few prepositions of time you are going to see today and their uses. For example, in, on, at, by, throughout, throughout, since, for, till, until, before, ago, after, etc. Here I would like to tell you first the extension of etc or expansion of etc. What is etc? आम तौर पे लोग कहते हैं etc. This is out of topic but you must know. बहुत सारे लोग etc करते रहते हैं. कुछ लोग इसको ईट्स कहते हैं, कुछ लोग एक्सेट्रा कहते हैं, कुछ लोग एक्सेट्रा, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं. लेकिन ये सही क्या है मैं आज आपको बता देता हूं. चूंकि आप अंग्रेजी के शिक्षक होने जा रहे हैं, दुनिया गलती करे लेकिन अगर आप गलती करेंगे वो भी अंग्रेजी में, तो यू लूज योर मॉरल, आपका मॉरल डाउन हो जाएगा, गलत हो जाएगा. etc इसको जब हम फैलाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो ये कुछ ऐसे बनता है. et डैश CETERA etc. दिस इज लैटिन. यह लैटिन भाषा है. आपको पता है कि अंग्रेजी जो है उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो रोमन्स ने जब इंग्लैंड पर कब्जा जमाया उस समय अल्फाबेट्स अंग्रेजों को सिखाया. तो अल्फाबेट्स का ज्ञान अंग्रेजों के पास रोम से आया. तो रोमन भाषा जो थी उसे लैटिन कहते थे.
तो ETC का मतलब एटसेट्रा। अब इसको जब हम फैलाएंगे तो क्या कहेंगे, एट मतलब ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एंड, और सेट्रा का मतलब होता है लाइक प्रीवियस थिंग्स, लाइक प्रीवियस थिंग्स, पिछली चीजों जैसा। जैसे आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसमें आप कहेंगे एप्पल, मैंगो, गुआवा, बनाना, ईटीसी। मतलब आप कह रहे हैं एप्पल, मैंगो, गुआवा, बनाना और पिछली चीजों जैसा, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो ऐसे पिछली चीजों जैसा और भी हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई, इसे आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। आमतौर पे लोग अंग्रेजी के शिक्षक होते हैं लेकिन उन्हें इतना पता नहीं होता है कि ईटीसी क्या इसका अर्थ है, बस ईटीसी ईटीसी करते रहते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, वो लोग कहेंगे बफर सिस्टम, बफर सिस्टम, जबकि बफर कुछ शब्द होता ही नहीं है, दैट इज बुफे। ठीक है, दैट इज बुफे, BUFFET, बुफे। लेकिन लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बड़ी शर्म आती है देख के, कितने पढ़े लिखे लोग भी बिना शब्दों का सही चयन किए बोलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। अंग्रेजी में बाउंडेशन जैसा कोई शब्द नहीं है, देयर इज नो वर्ड लाइक बाउंडेशन इन इंग्लिश, फिर भी लोग बोलते रहते हैं। तो ये सब मतलब ये पहचान है, कैसे आप जानेंगे कि उनको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो अभी जो आपके सामने टॉपिक है वो है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आमतौर पर जब लोग अंग्रेजी बोलते हैं या एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तब ये गलतियां बड़ी इनएविटेबल हैं, अपरिहार्य हैं। मोस्टली यू डोंट अवॉइड एंड यू फॉल प्री टू इट, इसमें आप फंस जाते हैं, शिकार हो जाते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं इन सारे प्रीपोजिशंस में से जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो है इन, ऑन एंड एट। इन तीनों को एक साथ देखिए तभी आपके समझ में आएगा इनके यूज अंग्रेजी में कहां होते हैं। इन, ऑन, एट। इन का नॉर्मली मतलब होता है में, ऑन का नॉर्मली मतलब होता है पर, एट का नॉर्मली मतलब होता है पर। अब इनका यूज एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखने जा रहे हैं आप, एज प्रीपोजिशन नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आएंगे। जैसे कहा जाए आई लिव इन इलाहाबाद, तो हियर इन इज बीइंग यूज्ड एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि इलाहाबाद इज अ प्लेस, इलाहाबाद एक स्थान है। लेकिन कहा जाए आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में वॉक करता हूं, तो हियर इन इज बीइंग यूज्ड एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, बिकॉज मॉर्निंग इज अ टाइम, समय जो है वो अलग होता है, स्थान अलग होता है। तो ये आपको और जगह देखने को मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक इंसान होता है, व्यक्ति होता है, होता वो एक है लेकिन उसके रोल कई होते हैं। एक ही व्यक्ति, कभी वो किसी का बेटा होता है तो किसी का पिता होता है, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी का भाई, किसी का दादा, और कभी कभी वो दूल्हा होता है, किसी का रोज नहीं होता है। तो एक व्यक्ति होता है लेकिन उसके रोल बहुत सारे होते हैं जीवन में, हर जगह वो अलग अलग रोल में दिखाई देता है। उसी तरीके से जो शब्द होते हैं भाषाओं के, उनके भी रोल अलग अलग होते हैं। यही शब्द कहीं कुछ काम करेगा तो कहीं कुछ काम करेगा। तो इन, ऑन एंड एट, these are the prepositions of place too, but here you are going to study these prepositions as prepositions of time. टाइम के रूप में देखिएगा और किसी रूप में मत देखिएगा। देखिए इनका जो यूज होता है वो मोस्टली पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इट इज यूज्ड for a particular period of time. It is used for a particular period of time. For duration, ऐसे समझ लीजिए, for duration. It is not used for
a particular moment or it is not used for a point of time. Point of time के लिए यूज नहीं किया जा सकता है. इनका जो यूज होता है वो किसके किसके साथ होता है, यहां देख लीजिए आप. मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वीक, month, year, summer, winter, etc. यहां जो भी ऐसा समय होगा जिसको हम कह सकते हो यहां से लेके वहां तक, फ्रॉम हियर टू देयर, अगर ऐसा कोई समय है तो वहां हम इनका प्रयोग करेंगे, अदरवाइज इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे. ठीक है, ये खूब अच्छे से आप देख लीजिए. लेकिन अगर यही पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मान लीजिए ड्यूरेशन नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसका यूज होता है, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम. अगर यही हो जाए नून, मिडनाइट, और कभी कभी नाइट टू, ठीक है. अगर ये हो जाए 9 o'clock, ये देखिए पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है. 9 o'clock, 10 o'clock ऐसे कुछ आता है तो हम क्या यूज करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे. लेकिन अगर हम यहीं ऑन की बात करें, या पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे. जैसे हम कहें कि एग्जांपल देखिए, I usually wake up in the morning. In the morning. Why? Because morning is a particular duration. एक निश्चित ड्यूरेशन है कि लगभग इतने बजे से इतने बजे तक ये मॉर्निंग मानी जाएगी. ठीक है, तो हियर यू कैन सी he met me in the evening. वो हमें शाम को मिला. इवनिंग इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, he will come to Prayagraj in July. बस जुलाई में प्रयागराज आएगा. ठीक है, we went to Bangalore in summer. हम समर में बेंगलोर गए. ठीक है, सो इन shows year, month and all these. जैसे इंडिया
got freedom in 1947। भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो 1947 में मिली, 1947 में ये स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो इनका यूज ऐसे किया जाता है। अब देखते हैं हम एट का यूज। अब जैसे एट आएगा तो एट कम्स फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कहा जाए ही met me at midnight. Midnight simply means 12 o'clock. That is a particular time. That is a particular point of time. वो particular point of time है। इसी तरीके से कहा जाए I saw him going to market at noon. Noon is a particular point of time, exactly 12 o'clock, 12 p.m. Okay? So this at he came to me at 10 o'clock. This is a particular point of time, at. So at simply means wherever you find a particular point of time, you have to use at. Wherever you find a duration of time, you have to use in, means where you find the concept of from and to, from 10 to 11, from 10 to 12. That very particular period of time will be called a particular duration and you have to use in with that. उसके साथ in का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, now comes on. On is very important. On बहुत ही important है, इस बात को आप ध्यान देंगे क्योंकि most of the questions that you find in your exams are found associated with on, with the use of on. On is specifically used for a particular date or day. Specifically, ठीक है, ये आम तौर पे किसके साथ यूज किया जाता है? दिन और तारीख के लिए आम तौर पे यूज किया जाता है एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए आम तौर पर, ठीक है, दिन और तारीख। Used mostly for day and date. अब उस डे और डेट से संबंधित जो कुछ भी होगा उसके लिए ऑन का यूज किया जाएगा। जैसे कहा जाए मैं उससे मंगलवार को मिला, मैं उससे मंगलवार को मिला। ठीक है, कैसे कहेंगे? I met him on Tuesday. Why? Because Tuesday is a day. Tuesday एक डे है, इसलिए पर्टिकुलर डे होने के कारण यहां ऑन का यूज किया जा रहा है। जैसे देखिए पिछला वाला सेंटेंस लिखते हैं,
India got freedom on 15th of August in 1947. This is the year. That is why in is correct, but this is date, and that's why this is correct one. On. Is that clear? But now some very difficult concepts, exceptions you see, that on is not used. यहां देखिए, नोट करके लिख लीजिए. On is not used for today, tonight, every day, every night, every night, every Sunday, every Sunday, every Sunday doesn't mean only Sunday. Every Sunday means every if it comes before the name of any day. किसी भी डे से पहले अगर every आता है तो आपको इसको यूज नहीं करना है. Every day, every night, every Sunday, every Monday. ठीक है? या this day, that day, it means this night, that night, this Monday, that Monday. Try to understand. If these words are added before these times, you must not use on for that. For example, he meets me every day. He meets me every day. On यहाँ नहीं होगा. He meets me every day. ऐसे नहीं होगा. He meets me on every day. He met them on that day. Wrong. Now it is correct. That day पहले on नहीं लगेगा. I slapped him tonight. I slapped him tonight. Here on will not be used. On का यूज यहाँ कतई नहीं होगा. I slapped him tonight. मतलब मैंने उसे आज की रात थप्पड़ मारा. तो यहाँ on का यूज नहीं होगा, कतई नहीं यूज होगा. तो on का यूज जो होता है वो डे के लिए होता है, डेट के लिए होता है. इन का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है. जबकि एट का यूज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है. एक विशेष पॉइंट जो होता है इस समय उसके लिए होता है. ठीक है.
There are a lot of examples that will not discuss in this small video, that will be discussed in the regular classes, especially that are going on our app, जो हमारे ऐप पर चल रही हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इनके यूजेस क्या होते हैं. बट I am giving you just a trailer. The next preposition of time is throughout. Throughout. Throughout is a preposition which is also known as the preposition of place. It is also used in the sense of place, but here we are going to study throughout as preposition of time. हम इसे preposition of time के रूप में पढ़ने जा रहे हैं. तो what do you understand by the word throughout? सबसे पहले तो हम इसका अर्थ जानें. Throughout का मतलब होता है पूरा, पूरा भरा हुआ, जरा सा भी खाली ना हो, कहीं कोने कोने तक. मतलब अगर if it comes in the sense of time means the whole time, पूरा का पूरा समय, जरा सा उसमें if and but ना हो. जैसे कोई कहे सूरज दिन भर चमकता है, सूरज दिन भर चमकता है. इसका मतलब हुआ कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मॉर्निंग टू द वेरी एंड ऑफ द इवनिंग सूरज चमकता है. बीच में कोई गैप नहीं है, बीच में जरा सा भी ऐसा नहीं होता है कि सूरज नहीं चमकता है. थ्रू आउट क्या मतलब पूरा, कोने कोने, शुरुआत से लेके अंत तक. तो थ्रू आउट. जैसे कहा जाए उसने जीवन भर कष्ट भोगा. मैं उससे रात भर बात करता रहा. तो जो भर का कॉन्सेप्ट है पूरे के सेंस में थ्रू आउट के द्वारा डिनोट किया जाता है. थ्रू आउट मतलब पूरा, कोने कोने, कॉर्नर टू कॉर्नर. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? थ्रू आउट. जैसे कहा जाए सूरज दिन भर चमकता है, तो कैसे कहेंगे? The sun shines. लिखने को आप लिख सकते हैं the sun shines the whole day. But that would not be the use of preposition. We are going through the use of preposition, so we must form a sentence in a way that throughout must be used over there. The sun shines throughout the day. Throughout the day. This particular preposition shows the day as a whole. The whole day. Now you need not write the whole because it is perfect in itself. अपने आप में ये पूर्ण है. The sun shines throughout the day. जैसे कहा जाए मैंने जीवन भर कष्ट भोगा, मैंने जीवन भर कष्ट भोगा, तो कैसे कहेंगे? I suffered throughout the life. I suffered throughout the life. मैंने जीवन भर कष्ट भोगा मतलब जीवन में एक भी पल ऐसा नहीं आया जब मेरे जीवन में खुशी आई. मैं जीवन भर कष्ट भोगता रहा. जैसे कहा जाए I kept talking throughout the night. मैं रात भर बात करता रहा. Throughout the night, it shows
the whole night. Now you can guess that where a particular preposition throughout is used in the sense of time. Throughout simply means right from one point of time to another point of time, and the duration that takes place between these 2 points of time, and for that you use throughout. But as a whole means there must be no gap, कोई gap नहीं होना चाहिए. Clear? So throughout is such a preposition. Now, next one, since and for. Since and for. These are mostly simultaneous prepositions, or two simultaneous prepositions. Preposition since is mostly used in perfect tenses. ये perfect tenses में use किए जाते हैं. Perfect tense and perfect continuous tense. How many perfect tenses are there? This is a fact. You must know that there are 6 perfect tenses. Present perfect tense, present perfect continuous tense. These are the 2 tenses, perfect and perfect continuous. The same thing happens in past perfect tense and past perfect continuous tense, and future perfect tense and future perfect continuous tense. So there are 6 perfect tenses, and in these perfect tenses since is used. Since is used especially in perfect continuous tenses, and perfect tenses means for is used in perfect tenses. For is used in 6 tenses, means perfect tenses, and since is mostly used in perfect continuous tenses in 3 tenses. For a definite time in a work that is in continuity. Suppose there is a sentence and a continuity is being shown there. एक सेंटेंस है जिसमें कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है. सेंटेंस है और क्या दिखाया जा रहा है? कंटिन्यूटी. उसमें लगातार कोई काम होना दिखाया जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है वो, और उसमें a definite time has been given especially for the commencement of that very work that is in continuity. खास तौर पे उस काम के लिए समय की शुरुआत दी गई हो जिस काम को कंटिन्यूटी में दिखाया जाता है, तो उसे हम since के द्वारा डिनोट करेंगे that definite time. And if a definite time has not given for the commencement of that very work in continuity, so you'll use for. जैसे कहा जाए सुबह से बारिश हो रही है. सुबह से बारिश हो रही है. कैसे कहेंगे? It has been. परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए सेंस के लिए. इट इज रेनिंग अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा. इट इज रेनिंग पूरी तरीके से गलत हो जाएगा. इट हैज बीन रेनिंग. इट हैज बीन रेनिंग सिंस It has been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही है. Since morning, because morning is a definite time given here, and for that we are compelled to use since. हमें since का यूज करना ही करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि morning दिया हुआ है, तो since का यूज करना पड़ेगा. अगर यहां it is raining लिख दिया जाता तो since और for दोनों के यूज गायब हो जाते, तब morning भी नहीं आता, तो it is raining simply होता. But if it has been given here in perfect continuous tense, so simply you have to use the helping verbs of continuous, perfect continuous tense, and that is has been. So it has been raining since morning. अगर ये ऐसे हो जाए, he has been teaching
He has been teaching me since 4 o'clock. Then since is correct because time is definite. वह मुझे 4 बजे से पढ़ा रहा है। लेकिन अगर इसी टाइम को इनडेफिनिट बना दिया जाए, when you cannot specify the time, जब टाइम को आप स्पेसिफाई न कर पाए, जैसे कहा जाए I am reading this novel. I am reading this novel for 4 days. I am reading this novel for 4 days. Why? Because this 4 day is indefinite. This is an indefinite time because which 4 days nobody knows. किसी को नहीं पता है कि कौन से 4 दिन. And that is why here for is used. Okay? When the time is specified, time is particularized, time is individualized, you have to use since, otherwise you have to use for. Okay? For का यूज आपको करना पड़ जाएगा. जैसे 4 days है वैसे लिख दिया जाए He has been torturing me for 4 hours. वो हमें 4 hours से torture कर रहा है. So this is perfect continuous. So you must know its depth. One more preposition we'll discuss today, and only after that the rest of the prepositions we'll discuss on our app. This is just trailer, and through this trailer you can understand that how will you be taught by me in your app in regular classes when you take admission. The one is by. By means not later than the time given. जो समय दिया हुआ हो उससे बाहर आपको नहीं जाना है. A particular point of time will be given. A particular time. Try to understand the concept of the use of preposition by in the sense of time as preposition of time. The by is used when a particular point of time is given as a limit. एक निश्चित point of time एक सीमा के रूप में दिया होता है, and some work or some incident has to finish within that very limit, but the work will be finished on a very particular point of time. Means, but that point is not defined, that point is not determined, and only because of that you have to use by. For example, if it is said कि तुम्हें यह कार्य जुलाई तक समाप्त कर लेना है. मान लीजिए it's May. Suppose that it's May and you have to finish that work by July. तो July is still to come. July अभी आने वाला है. July is yet to come. अभी July आएगा. तो July means 31st of July. July तक का मतलब हो गया कि 31st of July, the last day of July, after which the August begins. ठीक है? So that 31st of July is a point of time within which you have to finish that very work, and this shows that by has to be used here. By is just a sort of warning. जैसे कहा जाए तुम्हें यह कार्य जुलाई तक समाप्त कर लेना है. You have to finish this work by July. You have to finish this work by July. By issues a kind of warning. एक warning है ये, और ये कुछ भी नहीं है. July. जैसे कहना हुआ कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा.
So means I'll come before that very time, that is a point of time, and that point of time is 9 o'clock. No doubt there is a point of time, but you are not authorized to use at, because that point of time is not exactly your destination. Your destination is before that very point of time, but the work has to be finished on a point of time before that point. So कैसे कहेंगे? He will come by 9 o'clock. मीन्स वह 9 बजे से पहले आ जाएगा। तो 9 बजे से पहले वो कहीं भी आ सकता है। वो 8:30 बजे आ सकता है, 8:45 पर आ सकता है, 8:55 पर, 8:59 पर आ सकता है, बट नॉट लास्ट देन 9 o'clock. 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है। So these are the prepositions of time. These are a few prepositions of time. But if we'll go through the whole classes, all the classes that are going in our app, for that you have to take admission. And what is the procedure of admission? You have to call the numbers given on the board, and here or there you'll told the process of admission. The fee is very less, but it is going to be increased very soon. You can take the advantage of the fee, you can find the rebate, but you have to do the things fast. This much today, this much for you today, and next video you have to enjoy. That we'll see in the time to come. Thank you.